भारत उद्योग लघु उद्योग भारती का हमको इधर मैसूर से इधर बुला के आपके सामने बांटने को एक अवसर दिया है। बहुत धन्यवाद हो इसलिए। और सुनील माहेश्वरी को बहुत तकलीफ़ दिया हमें परसों से, वो भाग गया है लगता है वापस। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी हियर। एक बात का माफ़ी मांगता हूँ, तकलीफ़ से कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बात करने का, नहीं तो वो प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में है। गलत हुआ तो माफ़ी कर लेना। या R&D में क्या हो रहा है, बहुत बदल रहा है। लॉट ऑफ चेंजेस, अनबिलीवेबल चेंजेस। आप सपने में भी वो नहीं देख सकता, इस तरह बदल रहे हैं। इसलिए हम भी वो अडेप्ट करने का बहुत कोशिश करने का, और तकलीफ भी होगा। क्या हो रहा है, AI, ML, DA, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, IoT, ये 4 शब्द पूरा टेक्नोलॉजी भी नहीं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, सब में प्रभाव होगा इस पर। 4 कॉर्नर्स ऑफ न्यू डाटा सोसाइटी। क्या है डाटा सोसाइटी? सभी लोग अपना डाटा पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा अब से। अभी पैसे पर ध्यान दे रहा है, आगे वर्ष में डाटा पर उतना नहीं तो उससे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम एक महीना पहले इलेक्शन जीत के डायरेक्टर हो गया है नई यूनिवर्सिटी, नया यूनिवर्सिटी मैसूर में अगले साल चालू होगा। उसके पीछे इन्फोसिस का नारायण मूर्ति है, वो पूरा सपोर्ट से वो चालू कर रहा है। वो मेल ID मेरा इधर है। नेक्स्ट, क्यों ये MSME मांगते हैं सभी? देख लो, वर्ल्ड पॉपुलेशन 6.5 बिलियन, भारत का 20% इससे। पूरा वर्ल्ड का संपत्ति 100 यूनिट्स होगा तो जो भी हो, बिलियन, ट्रिलियन। The richest 20 people own 40%, 35 people own 50%, top 100 people own 85% of the wealth, and top 200 people, इससे भी कम, 4 रो या 5 रो का गिन किया तो पूरा संसार का 99% वेल्थ। मतलब क्या है, पूरा संसार में पूरा पॉपुलेशन पैसा नहीं है। 1% is being shared by 6.5 billion people. This is the problem with technology. This is the problem with high-tech industry. This is the problem with undemocratic society. It is the problem with inequitable society. सभी मिलके देखना, अलग अलग देखने का नहीं, क्योंकि सबका रिलेशन बहुत टाइट है। नेक्स्ट, हाईटेक और लार्ज कंपनी क्या करता है, बहुत वेल्थ जनरेट करता है। वेल्थ जनरेट करके 1 या 2 या 10 या 1000 इंडिविजुअल्स के होता है, बाकी सब कूली है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। और इससे ज़्यादा फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जितना वेल्थ हमारा देश को आ रहा है उससे ज़्यादा बाहर जा रहा है, बोथ लीगल एंड इलीगल। दिस फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी सीरियस। This causes 2 problems, inequity बताया भी, और policies against equity models, license राज, opportunity ही नहीं। Equity is the foundation for, जो रामराज बोलता है, रामराज का मतलब है equitable society। Equity नहीं हुआ तो रामराज बात करना उचित नहीं। Equity is the foundation of a healthy society, a quality society, a democratic society, a decent society. Wealth generation is important, but more difficult is wealth distribution.
सऊदी अरेबिया देख लो कितना वेल्थ जनरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं। इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, जिधर वेल्थ तैयार हो रहा है उधर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि पूरा हिस्ट्री देखो तो एक ही आदमी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोशिश किया। एम्परर अशोक का इतना वेल्थ था, पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या हुआ, 40 साल के बाद मौर्यन एम्पायर डिसअपियर्ड। उतना बड़ा एम्पायर, एनिमीज भी नहीं उनका, पैसा नहीं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एम्पायर कोलैप्स। सो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट, सस्टेनेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट अपॉर्चुनिटीज, डोंट डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, distribute opportunities. And distribution of opportunity gives you the following: resource use, jobs, local economy, market, customization, cultural integrity, appropriate use, empowerment, customized education, equity, efficiency. All hidden costs are removed. This is the mantra of MSME. MSME is the bedrock of another way to achieve equity. तो क्या करने का, अगर हाईटेक, पूरा हाईटेक हो रहा है फिर भी एमएसएमई करने का, क्या करने का, रिवर्स इंजीनियरिंग। देख लो 50 साल पहले पूरा हमारा ऑटोमोबाइल इंपोर्ट हो रहा था, अभी पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट बहुत कम है, थोड़ा कुछ मर्सिडीज बेंज, वो कार वगैरह, अदरवाइज वी आर नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। और अडेप्टेशन, ड्रिप इरिगेशन, एक्सीडिंगली गुड अडेप्टेशन। नहीं तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी, वो गन्ने का रस का मशीन है ना, ऐसा बहुत चल रहा है, पूरा देश जुगाड़ में जलता है। वो जुगाड़ का टेक्नोलॉजी को प्रोफेशनल करना हमारा काम है, जो काम करता है वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। कल्चरल कस्टमाइजेशन, ऑटो रिक्शा फेल्यूर था यूरोप में, इसलिए हमको भेजा, इधर बहुत सक्सेस। हमारा फैमिली, नेबर्स फैमिली, कुत्ता, बहन, सबको उधर लगा के ले सकते हैं ना, वेरी कस्टमाइज्ड। एंड अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। ऑटो रिक्शा यूरोप में पॉपुलर नहीं, क्योंकि लड़का लड़की जाने का, वो ड्राइवर क्यों इधर बीच में, बहुत तो तकलीफ होता है ड्राइवर होगा तो। हाँ, डिसरप्शन टेक्नोलॉजी, गूगल, एप्पल, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंटरनेट, ये पूरा संसार चलता है, ये 6 कंपनीज। IoT, सुलभ शौचालय, KVIC, पतंजलि, ये भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है। टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, जो भी बोलते हैं। मेक बाय आवरसेल्स, अभी मेक इन इंडिया बोल रहे हैं। आपको याद दिलाने का है कि 80 साल पहले वालचंद, हीराचंद इससे भी बढ़िया काम किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, बहुत बढ़िया काम। अगर वो, if he was allowed to continue, today we would not have had any defense imports. Nehru stopped it. He nationalized it, and today HAL, that's why, you see, it's not Indian. Hindustan Aeronautics Limited, it is not Indian Aeronautics Limited. वो इंडिपेंडेंस के पहले चालू किया, बहुत बढ़िया आदमी, इंडियाज फाइनेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। सभी भूल गए वालचंद हीराचंद को। देन टीच टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, छोटा कंपनी है, हाईकाल मैग्नेट्स, हमारा क्लासमेट का है बेंगलोर में। 6-5 साल पहले 80% का सभी मोबाइल वर्ल्ड में वो मैग्नेटिक कॉइल वो कंपनी से चल रहा था। वेरी गुड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। गो ग्रीन, गो क्लीन, रिवर्स RR 3R टेक्नोलॉजी, संसार से बहुत बढ़िया कंपनी सेल्को, इन्फोसिस से 10 बार बढ़िया कंपनी है। पैसा उतना नहीं, काम बहुत बढ़िया है। हरीश हंदे बोल के, और अभी वो वर्ल्ड प्रेसिडेंट हो गया, सेल्को इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट हो गया बेंगलोर में बैठ के। बहुत बढ़िया कंपनी। नोट, इसरो प्रोग्राम्स कॉस्ट 10 to 30% ऑफ द सेम ग्लोबल कॉस्ट। वन एक्सेप्शन इज इसरो। क्यों है? फाउंडर इज प्रोफेसर सतीश धावन। वेरी इंटरेस्टिंग वे, बुरा मत समझना। इसरो इतना सक्सेसफुल है क्योंकि उसका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, दिल्ली में नहीं। पचास साल से जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स दिल्ली में आता, वो सभी
बेकार हो गया अभी, पब्लिक सेक्टर्स, डिफेंस, सभी, क्योंकि वो दिल्ली होगा तो वो एक घर से चल रहा था पूरा देश. Very good. Satish Dhawan was IAC director. He was asked to start ISRO by Indira Gandhi. He told only one thing, Madam, I will start on 2 conditions. One, I will be IAC director, 4 days a week. 3 days a week, I will be ISRO director, but I will take 1 rupee salary from ISRO. She agreed. That's why ISRO is running so well today. And Abdul Kalam, election commissioner, शेषन, सभी सतीश धावन से तैयार हुए. सतीश धावन नहीं होगा तो अब्दुल कलाम भी नहीं, शेषन भी नहीं, UR राव भी नहीं, इसरो भी नहीं. इतना बढ़िया आदमी. न्यू टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, मशीन लर्निंग, DA, डाटा एनालिटिक्स, कुछ लोग डाटा साइंसेस भी बोलते हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये शब्द हमारा नर्सरी स्टूडेंट्स को भी अभी मालूम है. ऐसा हो गया क्योंकि वो जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ना, 90% ऑलरेडी ये सभी उधर है. इसलिए आपको रोड में जाके गूगल मैप लगाए तो वो बोलता है नहीं, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, 40 मीटर के बाद इधर जाओ, उधर जाओ, पूरा ये हो गया है. क्या ये टू प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ द कंजेक्चर दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग और एनी अदर फीचर ऑफ इंटेलिजेंस कैन इन प्रिंसिपल बी precisely described, that a machine can be made to simulate it. Every aspect of learning and intelligence can be made put into a machine. हो गया है, उससे भी ज़्यादा हो गया है, घबराने की स्टेज आया है अभी. Really, we are in a very uncomfortable moment where machine intelligence is already proved superior to human intelligence. Proved. दो काम है इसमें. We can use it for good causes, we can use it for bad causes. Next. कैसे चालू हुआ ये सभी? बोलते हैं चेस खेलने में बहुत दिमाग का काम होता है, इसलिए चेस प्लेयर्स आर वेरी इंटेलिजेंट. क्रिकेट प्लेयर्स आर नॉट इंटेलिजेंट. फुटबॉल प्लेयर्स आर डेफिनेटली राउडीज. हाँ, चेस इज डेफिनेटली ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस. सो वो प्रोग्राम लिखा चेस खेलने में, पूरा चेस गेम्स को पढ़ाया, प्रोग्राम में डाला, डाटा लगाया उसका, ऐसा मूव हुआ तो ऐसा करने का करना, सभी सिखाया मशीन को. और नेक्स्ट देख ले. 10th February 1996, IBM Deep Blue computer defeated Garry Kasparov, who was highest ELO rating in the world then. विश्वनाथ आनंद 3 बार उनसे हार गए और कंप्यूटर उनको डिफीट कर दिया. वेरी इंटेलिजेंट. नेक्स्ट, IBM Watson defeated 2 human contestants in Jeopardy. वो कौन बनेगा करोड़पति जैसे. सी, अगले साल से कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम रख के हर एक कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ ले सकता है. वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इजी टू प्रोग्राम, वेरी इजी टू मेक इट लर्न. It will learn so much that it can even anticipate क्या क्वेश्चन पूछता है अमिताभ बच्चन. वो स्टेज आया है. इवन देन चेस से भी इंटेलिजेंट गेम है गो. 2015 तक कंप्यूटर भी उनका नहीं डिफीट होता था. कंप्यूटर कुड नॉट डिफीट द गो चैंपियन साउथ कोरिया का. 2015 में कंप्यूटर गो चैंपियन को डिफीट किया. कैसे डिफीट किया? पूरा प्रोग्राम लगाया, कैसा खेलने का, मैच लगाया, कंप्यूटर हार गया, 2 बार हार गया. You know what they did? AlphaGo versus AlphaGo.
दो प्रोग्राम को एक के साथ एक खेलना, 4 घंटा खेल के कंप्यूटर वो आदमी से खेला, हार गया वो आदमी। 4 घंटा में पूरा नॉलेज ऑफ गो, 1000 वर्ष का नॉलेज 4 घंटा में पैदा हो गया, एक प्रोग्राम और एक प्रोग्राम से मैच। अभी एक कंपनी है हांगकांग में, 5 डायरेक्टर्स है, उसमें 4 मनुष्य डायरेक्टर्स, एक प्रोग्राम डायरेक्टर है। वो प्रोग्राम डायरेक्टर 80% डिसीशंस प्रॉफिट देता है। वो 4 लोग क्या कर रहे हैं अभी, पूरा डिसीजन कंप्यूटर को दे दिया है कंपनी का। और एक कंपनी चालू होने का है, एक आदमी 4 प्रोग्राम। देख लो, 4 डायरेक्टर्स का सैलरी बेनिफिट्स नहीं देना है, कार नहीं देना है, बंगलो नहीं देना है। हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम्स नाउ टेक बेटर क्वालिटेटिव डिसीजंस देन ह्यूमंस कलेक्टिवली। It has reached, and China has modified its company law to allow virtual entities to be directors, and they are even legally accountable. Next, machine learning. AI का है subset, machine learning, statistical method. The machine learns itself how to behave when a new data instance is provided. कोई नया आदमी आए तो कैमरा लेता है पूरा, वो ये आदमी 10 साल पहले इधर स्टूडेंट था, अभी दाढ़ी लगाए तो ऐसा दिखता है, ये इधर सिर पे पूरा बाल्ड हो गया तो ऐसा दिखता है, पूरा एनालाइज करके बोलता है, हो ये 10 साल पहले इधर का स्टूडेंट था, उनको अंदर इट विल एनालाइज। ये स्टेज आ गया है, डिप्लॉयमेंट भी है, जनता डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है, 6-5 साल में पूरा जनता डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, डीप लर्निंग, डाटा साइंसेस। नेक्स्ट, इधर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डीप लर्निंग, ये सभी इंटर रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीच का भी देखता है, इमोशन, ओपिनियन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और कॉन्टेक्स्ट और विजुअलाइजेशन सभी। नेक्स्ट, व्हाट कैन ML डू? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोसिस, स्मार्ट फार्मिंग, क्लाइमेट प्रेडिक्शन, जीन थेरेपी एंड जीन लीनेज। आपको फेमस फिल्म स्टार एंजेलिना जो का बात एक सुनना चाहता हूँ कि she realized she has a form of cancer inherited from her great grandmother. जाके ब्लड टेस्ट दिया, DNA एनालिसिस किया, और DNA एनालिसिस के बाद पता लगे कि एक जीन पूरा 100,000 ईयर से ट्रांसफ़र हो रहा है उनका फैमिली में। वो जीन का एडिट किया, उनके बच्चों को लिया, वो डिजीज़ नहीं आता है। वो $1.5 मिलियन खर्चा हुआ, उनको हुआ। 10 साल के बाद यही ऑपरेशन 1000 रुपये में होता है इंडिया में भी। मशीन लर्निंग पूरा जीन एनालिसिस दे के बताया, वो ग्रेट 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 ग्रैंड मदर से आ रहा है आपको। इधर एक कंपनी है कैलिफोर्निया में, $100 भेजा तो आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवलप बेचता है, वो ओपन करके आपको आपका सलाइवा लगाने का, सील करके वापस भेजने का। 1 हफ्ते के बाद आपको रिपोर्ट आता है, बोलता है ये सामने वाले बैठे आदमी और मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, उनकी ग्रेट 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 ग्रैंड मदर ब्रदर सिस्टर थे। पूरा जीन एनालिसिस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड मैप, $100। पूरा मशीन लर्निंग, ये डाटा कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम से नहीं वर्क होता, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ओनली। और फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन बोलते हैं ना, सभी प्रॉफिट करना, पूरा बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, स्टॉक मार्केट्स रन ऑन मशीन इंटेलिजेंस नाउ। पूरा डाटा लगाते हैं, वो कंप्यूटर जो बोलता है वो स्टॉक को सेल करना या बाई करना, वो वही रखने का
डिसीजन वो दे दो, आदमी का कुछ काम नहीं, चलन फिलअप करने का, चेक फिलअप करने का, बस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ब्लॉक चेन, सभी मशीन लर्निंग है। नेक्स्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। मिनिस्टर जी बताए बहुत बढ़िया है टेक्नोलॉजी, बट वी शुड नॉट यूज इट। 25 लाख जॉब्स डायरेक्टली लॉस्ट, 1 करोड़ का जिंदगी का इश्यू है ये। 25 लाख जॉब डायरेक्टली लॉस्ट। इसलिए हाईटेक बहुत सूक्ष्मता है, सोच के उपयोग करना, नहीं तो दुरुपयोग बहुत होता है। 20 वी शुड नॉट सपोर्ट दिस। सपोर्ट परवाह नहीं, क्योंकि हमारा रास्ता और ट्रैफिक सिग्नल कितना अद्भुत है। नो सेल्फ ड्राइविंग कार विल वर्क। Self driving car works when people obey traffic laws. When people don't obey traffic laws, self driving cars is a disaster. Every technology has good and bad aspects. We have to understand this and choose and deploy carefully. Next, medical diagnosis. रेडियोलॉजिस्ट का शॉर्टेज है और पैथोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट का शॉर्टेज है। शॉर्टेज होता रहता है और 50 साल के बाद भी शॉर्टेज होगा, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। मशीन लर्निंग विल हेल्प डायग्नाइज वेरी क्विकली, वेरी एफिशिएंटली, वेरी लो कॉस्ट, वेरी रिमोट एंड इनएक्सेसिबल पीपल। अभी स्मॉल कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन बैंगलोर एंड अदर प्लेसेस। नेक्स्ट, perhaps the most relevant application of machine learning for India, given the higher cost and limited accessibility of diagnosis. We have shortage of trained, no visible impact on employment since the technology supports human experts to become more productive rather than replacing them. On a small scale, it's already happening. I'll come to that example later. Next, smart farming. ये ज़रूरत है कि हमको agriculture needs lot of intervention, technological, social, financial, economic, marketing, food processing. Maximum intervention is needed in agriculture in India because agriculture is the most neglected sector for a very long time. Next, robot apple harvester. न्यूजीलैंड में जनसंख्या कमी है, एप्पल प्लकिंग का भी लेबर नहीं मिलता, इसलिए ऑटोमेटिक रोबोट। फार्म्स फंड रोबोट्स टू रिप्लेस माइग्रेंट फ्रूट पिकर्स. Labor shortage will be there. Even though India has a huge population, labor shortage is there. Very, very peculiar situation in India. People will sit without working, but work is available, they don't want to take it. They just want to sit and wait for the apple to fall. Very strange circumstances. Very difficult to understand and manage. Next. Smart farming will come to that. Next. Yeah. Machine learning in text processing. Very important application simply because it has had a very dangerous situation that emerged in India. Next. So, word cloud, visual data, word cloud, tag, single word, आपको SMS, email, voice commands, बहुत सभी मोबाइल का उपयोग करते हैं. अभी देखता है 1 or 2 are already SMSing and all. They won't keep quiet. ऐसा हो रहा है. Next. Take. These are the words that came in 2004 election. So many words analyzed by intensity, density, popularity, repetition, consolidation, etc., etc. That's why these are in peak. This is 2019. Analysis of the words of all the population, which expressed on the media. Next. India. Next. Tourism destinations in India. Next. Sentiment analysis. Very, very sentiment analysis. Sentiment drives emotion. Emotion drives action. And sentiment-based actions are very powerful. Unlike professional responses. This is what?
Online review systems, decisions, recommendations based on user review. That's why आप सभी Facebook लगाए तो Twitter, I like it, I don't like it. This is what is happening. Social media. Next. Judiciary, very important intervention in India, because whenever you talk of judiciary, what do you talk of? Corrupt, biased, broken, failed. No compliments for judiciary. 10 years back it took the case. They should have hanged him, but they have given him only 2 years jail penalty. This is no compliments for judiciary, and unfortunately it is in that stage. Reason is more than 3 crore cases pending, many for more than 10 years, 5 to 8 lakh cases lodged every day, global standards far away, 20 judges for 10 lakh people, huge gap. Next. Future, predicting outcome of legal case using machine learning algorithms, understand the likelihood of winning a case. Deloitte says 1 lakh jobs in legal sector have a high chance of being automated in the next 20 years. Next. ये होगा. आपका केस एक ATM मशीन जैसा मशीन होगा, वो फीड करके 5 मिनट के बाद आपका वर्डिक्ट. 5 मिनट लेट है, 1 मिनट में देता है. अभी एडवर्टाइजमेंट है ना, 3 मिनट्स लोन सैंक्शन, वैसा 3 मिनट में वर्डिक्ट, नो अपील. All AI in judiciary, lawyers will object, all lawyers will object. Clients will be very happy, because even a famous case will cost only 100 rupees expenses, 3 or 5 minutes. Only person who will not be happy will be LPY, Lalu Prasad Yadav. You cannot, it will happen. It will definitely happen. At least all the traffic offenses, all this will be automated. There is an evidence, you pay and get out. No argument, nothing there. Okay. Next. Data. Kitna data? Millions, terabytes of data every day. समझ लो, एक दिन में ये सेमिनार का कितना डाटा है, एक लाइब्रेरी का डाटा. रोज एक लाइब्रेरी का डाटा जनरेट होता है. इतना डाटा संसार में, कितना उपयोग है इसमें? 1%, लेस देन 1%. What is that less than 1%? Very important data. That is called data mining. Okay. Next. Turning raw data into useful information. Proposes to provide answers to questions being asked at a program site or this thing. Analytics is getting beyond statistical insight of data, useful in predicting behavior of process. For example, all the industrial machines today, maintenance is predictive maintenance. हम भी करता है ना, हमारा नेबर का लड़का ये बोलता है ये ऐसा होगा तो 2 साल के बाद आप जेल जाता है. We predict based on behavior and observation. Same thing is happening. Programs are completely analyzing the behavior of machines, and it will tell that if you don't attend to this machine today, tomorrow it will have failure. So, preventive and anticipative maintenance is going on everywhere. Initially, very expensive, but you can sleep in peace, because breakdown is 10 times more expensive than repair. Almost all the automated factories now have diagnostic and preventive maintenance, predictive maintenance, anticipatory maintenance. Next. Some of you may have heard this word Cambridge Analytica, right? It's a machine learning company, and there are 100 such companies in Bangalore alone now, doing very similar things, not the same thing, very similar. What do they do? ज़्यादा पॉलिटिक्स है, पैसा भी बहुत है, tens of millions of dollars have been given. They intervened in 2 elections, Kenyan government election and election of Donald Trump, which was finally
proved when WikiLeaks exposed it, because Russians hacked the Democratic Party server, Julian Assange released it to public, which clearly showed that these people had intervened, and you must realize Trump won with lesser votes. He won with strategic votes, not with numbers, strategic votes. That is because Cambridge Analytica had intervened. Next. You see here, Kenyan Supreme Court, the Kenyan election was invalidated by the Kenyan Supreme Court and told, you have election once more. Because this election has been intervened and biased and skewed. Not a fair election, unfair election. Next. This is it. You see, suddenly the Ted Cruz, who was a no contender to Donald Trump, almost became the contender. And they admitted that Trump had used Cambridge Analytica help to manufacture the consent of people. You are not willing to agree to something, but they have seen you. They have seen what you will agree for. They have used it to make you agree for something you may not have agreed at that moment. They have given you all the influencing factor. This is sentiment analysis. Computer programs now do. That's why whenever you are on Facebook, Twitter, emails, everything, Google knows more about you than you know about yourself. Even when your mobile is in silent mode, that is listening to you. Everything is heard. Everything is recorded. They know exactly what you will talk tomorrow in this situation. They will know what your judgment will be when given this context. Therefore, they will prepare the context. They know what boundary conditions make you vulnerable. They will create the boundary conditions like that. Next. This is it. See, we have profiled the personality of every adult in the United States of America, 220 million people. Entire adult population of America, Cambridge Analytica knows how many times they go to the bathroom, what toothpaste they use, when they brush, how they brush, which car they use, when was the tire puncture, what do they talk to their children, everything is known. That's why many times you will get a package from Amazon or Walmart. When you open the door, you will realize that's a package you were about to go and buy in the shop. It has already come to your doorstep. Of course, they have collected your money. That's a different issue. Oh, predictive sentiments, predictive analysis, very difficult to this thing. Do we want technique and data to determine our political leaders? Would they work for your party or opposition or Mahagathbandhan or even Pakistan? Possible. It requires very little money. Programs and computers are available, and all these work very well with data. Who gives the data? You give. Whenever you make a phone call, SMS, you buy something, everything you are generating so much of useful data about you which you don't know, which you don't value. I have a very, very smart phone. The smartest phone in the world I have. I am smart, this is phone. Together we are smartphone. I don't want my smartness to go there. I want to return. I have a dumb phone and I want to be smart. What happens when you have a very smart phone? You become dumb. And very easy to control you when you are dumb. This is exactly what's happening in society. We don't understand. The greatest problem is social media, because social media has already become anti-social media. I am not on Facebook. I am not on Twitter. We are thrilled that our revolutionary approach to data-driven communications played such an integral part in President-elect Donald Trump's extraordinary win. They have claimed in their company. This is how you are already a pawn with artificial intelligence, because that intelligence is better than your intelligence already.
Today it is isolated. 40 साल पहले डाउरी आइटम रिस्ट वॉच था. अभी डाउरी आइटम रिस्ट वॉच दिया तो क्या मिलता है? सेम थिंग. टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a technology where it is impressive. Tomorrow वो रोड साइड में जो बेचता है उनका भी पास भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है. क्या करते हैं आप लोग? एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स. And they are very powerful programs. They can beat you. They can beat Gary Kasparov. They can beat Vishwanath Anand. They can think better than you. They can give better decisions than you. What will you do? Next. These are the Trumps, this thing. Is Trump an easily maneuverable pawn? Yes. So are we. जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसका ऑपोजिट डिसीजन लेना पड़ेगा आपको. ऑल द फैक्टर्स विल बी लाइक दैट. वी मेक रॉन्ग चॉइसेस. द प्रोग्राम्स नाउ कैन मेक श्योर दैट वी ओनली डू रॉन्ग चॉइसेस एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट. ओके, या. Next. Is it? WikiLeaks created that. Next, when the Russians hacked it, the entire cycle which is now reproduced. Next. Congress commissioned Cambridge Analytica for election purposes in India, perhaps to attempt influence or even intervene. Congress party paid money to Cambridge Analytica in the last election. People know that, right? In the news it had come. Is it? But next election, everybody make an attempt. Everybody can make an attempt, use it. And in fact, much stronger than Cambridge Analytica. Even more powerful machine learning companies are there which can handle your data and manipulate sentiments and opinions. Next. From data to prediction. Computational problem. Given Facebook data, predict the ocean score. What is ocean score? Openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness and neuroticism. These are the 5 parameters which tell you what to do. For example, in the recent terrorist attack in Australia, they had analyzed this, and just before that person did a terrorist attack, he was fed with very provocative video on the Facebook. And then suddenly he took a knife and started killing people. So he was triggered. So these ocean scores are available for all of you, because you have already put all your data on the Facebook. They have mined it, structured it, data analyzed it. Now they are ready. If they want some response from you, which you will not do normally, they know what to provoke you to get that response. Next. So this is it. Training data, Facebook. New person, test data. Find out whether the new person is like you. और एक बकरा मिलता है क्या? देख ले. This is what is happening. Very clearly they will analyze and say, yeah, ये आदमी आप जैसा है, you two will get along, you two can be made to do collectively good or bad, whatever it is, right? Yeah. Next. This is it. But healthcare, very good things can be done. For example, in Arvind Eye Hospital in Madurai, with a mobile phone, they capture the eye conditions of 60 villages around Madurai. Volunteers go, email it on the mobile phone, comes to Madurai Hospital, experts diagnose it, recommend treatment, recommend medicine, and if operation is required, volunteers go, bring the patient to Madurai, get them operated, take them back home. Nobody from the family need to come, free of cost. They do 2 lakh operations per year, about 1,25,000 to 1,30,000 per year, free of cost. World's best healthcare. And with 70% not paying, free boarding, lodging, lens, operation, transport. They still make profit. Amazing healthcare, unbelievable. But very high quality technology intervention. So ML can do this also. ML can do that also. We have to decide. We have to be aware
We have to educate others to discriminate between positive use and negative use. Next. Genetics. We have lot of genetic problems in India क्योंकि 30% शादी हमारा कजिन से ही होता है. Lot of inbreeding in India which has caused severe genetic deformity. You will see that more in Andhra and in South Karnataka. Plenty. Particularly those who are from Karnataka would know the Sanketi community has the largest percentage of deformed, autistic, stillborn children because Sanketi community has the highest percentage of close inbreeding marriages in this. Same thing, DNA analysis. Next. Drugs. Today, pharmaceutical companies and medical companies don't waste time with a test tube. Everything data is analyzed, potential combinations are printed out, and only few of them are finally prototyped. Nobody does clinical trials before. Now it's all done on the computer. After that, sample medicines are prepared. Next. Predictive diagnosis. Younger generation एक बैंड लगाता है ना wrist पे. Such things will happen. In America, 3 months back, law was passed. क्या है वो law? जो इंश्योरेंस लेता है मेडिकल इंश्योरेंस, ये बैंड 24 आवर्स पहनना पड़ेगा. एक क्षण निकाला तो इंश्योरेंस इनवैलिड, क्योंकि ये 24 आवर्स 365 मॉनिटर कर रहा है, मैसेज देता है आपको आधा घंटे के बाद हार्ट अटैक होने का है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ. बिकॉज प्रेडिक्शन and prevention is very, very profitable. Machine learning all over the world, artificial intelligence is mainly supported by insurance companies. Whether it's vehicle insurance, life insurance, health insurance, they are the ones. Because एक हार्ट अटैक हुआ तो 5 लाख खर्चा होता है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को. हार्ट अटैक प्रिवेंट किया तो 4 lakh profit. So prevent. How to prevent? Diagnose well in advance. You will see that. Next. Is it? How it is done is using what is called Internet of Things. सबके पास मोबाइल है ना? है. क्या करता है मोबाइल से? How many useful things do you do in a day with mobile? Very little. Some have 2 mobiles. One is not enough. Some have other smart devices. Tomorrow, every room will have 1,000 devices like this. Because sensors are very cheap. All kinds of sensors. Temperature, humidity, pressure, sound, heat, light. जो मांगते हो वो मिलता है. क्या करो वो सभी लगा दो, पूरा अर्थ में लगा दो, डाटा निकालता है, एनालाइज करो, कुछ ना कुछ काम होता है. That is the philosophy of Internet of Things, where everything is connected. More and more devices. इससे अच्छा भी होता है, बता देंगे. नेक्स्ट. इज इट? सी, बॉडी एरिया नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं वो शरीर का होता है. हार्ट में एक, लंग के पास एक, किडनी के पास एक, स्पाइन के पास एक, पूरा सेंसर्स, मॉनिटरिंग, सेंसिंग, ट्रांसमिशन, गोस टू ए कंप्यूटर, analyze, visualize, even doctor. Immediately your family doctor gets a message that you are about to have a paralytic stroke. Immediately message to ambulance, ये address पे जाओ.
prescription sent to the medical stores. ये ready रखो, ward ready रखो, insurance भी ready रखो. This is it. 24 hours it's. And insurance companies will insist. It will happen in another 5 years. Indian health insurance will insist on this, saying we want to monitor you, otherwise we will not give you insurance. Next. System sensing. See, heart, lung, kidney, sabhi, eye, ear, skin, inside. Now there are what are called biosensors. They can go inside and check your pH and your metabolism, your glucose content, your protein deficiency, everything. 24 hours it is monitoring you whether you are a safe body or not. खर्चा ज़्यादा ना होता है, नहीं. 1,000-2,000 रुपया से पूरा सेंसर सभी मिलता है. इंश्योरेंस कॉस्ट इज हाई. थोड़ा तकलीफ भी होता है. Lot of patches and other things. We'll see. Next. See, देख ले. Different type of sensors. Inside, glucose, molecular level, skin level, organ level, tissue level, bone level, brain level, sabhi. Everything can be monitored now. Sensor for medical application. You can do it. Nagpur, Bangalore, Chennai. Nagpur can do because my good friend Patrikar is there in this thing, who is a very good specialist in this, in VNIT, head of VLSI Embedded System Group. He can do such things. We have to do all this. We have to do all this. There's a lot of scope for entrepreneurship in this because we can supply to the rest of the world. We can do it very well, cost effective, acceptable quality, large volume, useful for our population, useful for export, creates jobs, plenty, and uses local resources. Next. See. Even more interesting, how they will do is, everybody, many of you wear a socks. Socks becomes a sensor. So, क्या मांगते हैं? New entrepreneurship, sensor embedded clothing. Tirupur, Surat, Madurai, Coimbatore, Ludhiana, they are all suffering because of textile slowdown. But if you can put sensors into that technology and help them, they will be able to export to the rest of the world. Because we know very well what we do is cost effective. I'm not saying it is cheap, it's cost effective. But this is a technology intervention which they don't know how to handle unless high-tech people sit down, do samples, set up a manufacturing base, train people, then they will do. Then they will do. Next. Agriculture, very important. Lot of things are happening in agriculture. You drones you saw, वो शादी में reception photo निकाल के, but that's what we are using. We are not using for interesting things. Traffic, crime, fishing, remote resources, floods, famine, wildlife monitoring, crops, all this can be monitored through drones. You need lot of things. You need GIS, you need location-based servers, you need backup supply and services. But this data is very important. We have missed that. Okay, plenty of things. It's called digital agriculture. Lot of intervention. One thing machine learning can do, it can predict when a disease will strike the crop. That it can do. When to harvest a crop, what is the quality of the crop. Everything it can be done because all you need is a mobile camera which records data every day. That anybody can manage, send it. It will analyze and give the farmer an indication. Such things happening. There's a very interesting institute called Vadhwani Research Institute for Artificial Intelligence in Mumbai. They are doing for cotton farmers. My student only is working in that. Very interesting work. Next. See, so many sensors. One wristwatch today is more powerful than a supercomputer. It can do so much. All it needs is sensors to collect data. Rest of it can do. And there are a lot of versions of this. This glass which has a TV screen has already come. So you are, किसी को इंटरव्यू करने का है, नहीं तो वो पार्टी टिकट, MLA टिकट मांगता है वो. 1 घंटा पहले जो बात किया है
किससे बात किया है, क्या बात किया है, पूरा वो पार्टी लीडर को मालूम है. Very interesting. Surveillance. Everything is known about you, you cannot lie. Next. This is, dekh le. The point in human history when machines have more intelligence than human, 2017. That's the time when all the difficult problems which humans couldn't solve, but computers solved it correctly, just because all the data given to machine and humans couldn't solve. Even a group of humans couldn't solve. For example, even in chemistry they put all the possibilities and ask the computer program to tell what are the new devices that can come out. It analyzed better than a Nobel laureate. Next. This is Internet of Things. Next. Internet of Everything. IoT in agriculture. Next. IoT in agriculture, IoT with farmers, IoT with farm animals. Next. This is how smart agriculture is done. We have developed boards like this in Mysore. It's easily done. It is entrepreneurially potential. Next. This is the entire agriculture roadmap. NABARD, Ministry of Agriculture, technology provider, input suppliers, their matrix, all this has to be put into the data framework. Next. So it will shift from possibility from rural agriculture to urban agriculture, vertical farming. आपका roof में vertical 10 layers of farming, it will happen because urban farming will start dominating. You grow your own vegetables, you grow your own crops, and it will all be done through IoT. Next. Lot of gadgets have come and wearable technology is already there. Plastic jaisa electronics aaya hai, so it can use that. Next. This is it. Pura smart devices, body area network, health analytics. See, body has so many places where if you pick the data, diagnosis is very easy. Wearable technologies. This is it. See, smart ring, smart glass, smart shirt, smart watch, Bluetooth key tracker, smart shoes, smart socks, smart pants, smart belt. Everything smart. Only human being is dumb. Next. Yeah, this is it. This is how the scheme looks like. You are network. You are part of a network. You are an intelligent agent communicating bidirectionally, sending data, receiving instructions. More than 100 companies already there in the world, all of whom are completely disrupting the present way. We don't know which way it will converge. But you look at, first thing was Hotmail. Hotmail became very cold. Late, then Yahoo, then Google. Now we don't know. In another few years what will come, because something that will come will knock Google out. Next. This is it, how government will look at data. Future government, data will be the currency of future. Now you have district, divisional, what's it, DC? District collector, district magistrate. Future will have data collector and data manager. They will be more powerful than the district collector. Because the one who has the data is the one who controls you, not the legal authority alone. Next. Yeah. What happens when something is digitized? Music. Till music was not digitized, you had to struggle hard to listen to a song, Vivid Bharati, Binaka Geetmala, all that. Today, your own Geetmala, whenever you want, you can download, because digitization means democratization, making it low cost, high quality. Sometimes machine learning will not work well, you have to be careful, because reality and model may be so different. Next. Yeah. One video is there, just watch it. One of the most disturbing video I have ever seen in my life. Play that, and after that we'll take the questions along with others. Yes. Now, it's a pleasure to be here in Las Vegas to present to you. Now, I get invited to do keynotes across the globe, and while it's easy for me to be here in Las Vegas, it isn't always easy for me to travel across the world.
And even when I do, I can't always speak the local language. Well, what if neither language nor distance mattered for me to deliver a fantastic keynote? What if technology could help me be anywhere I needed to be and speak any language I wanted? Well, it can. We are bringing together the power of mixed reality and Azure AI services to create a truly game-changing experience. What you're about to see is an exact hologram of me wearing this same outfit that we recently captured at a mixed reality studio. And I don't speak Japanese, but what if I wanted to deliver my keynote in Japanese? Using Azure AI technology, I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like me, the same voice tones, those same inflections. Now we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to the special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのが新しいのです。私は日本語を話しませんが、私の声とホログラムは完璧な日本語で話しています。これはニューラルテキスト読み上げと呼ばれる最新の人工知能技術、いわゆるニューラル TTS を使用しています。私たちは自分の声の録音を使用し、私のように聞こえる私自身の個人的な音声署名を作成します。日本語からフランス語、ポルトガル語まで話せます。今、この技術は私たちが働き、遊び、生活する方法に関して、世界中の国境や障壁を取り除くことができると想像してみてください。まさに SF が現実になるところです。This is mind-blowing technology. And what you just saw was my life-size hologram, my exact replica, rendered here in real time, speaking Japanese with my unique voice signature. To do this, we use mixed reality technology to create my hologram and render it here live. Then we use Azure speech-to-text capability and English transcription to get my speech. Then use Azure Translate to get the speech into Japanese, and finally applied neural text-to-speech technology so it sounded exactly like me, just speaking Japanese. And the most amazing part? All of these technologies exist today. The future is here. Very scary, because it's a fact. Now they are making phones where you decide किस भाषा में आप बात कर रहे हो, किस भाषा से आप सुन रहे हो, सेट किया तो नथिंग, आप मराठी में बात कर सकते हैं, वो रशियन में सुनेगा, वो रशियन में बात करेगा, आपको मराठी में सुनेगा. रेडी, ऑल रेडी, एवरीथिंग. इसमें क्या नहीं रेडी है, खून नहीं रेडी है, मांसखंड नहीं रेडी है, और बोन्स नहीं, वो भी तैयार हो रहा है. वेरी स्केरी, but very powerful, very capable. I don't know what to do.